Good morning, students. Today, in the chapter surface area and volume, we will see the next solid figure, which is right circular cylinder. Now, this is a cylinder, okay? And we have seen many, this is also a cylinder, okay? So, in our life, we see many cylinders. So, the solid having a curved surface area with two plain circular ends is called a cylinder. Example, roller, circular pillars, markers, etc. Now, this is a rectangular sheet. This is a rectangular sheet of paper, and if I roll this paper, so what I will get? What I am getting? I am getting a cylinder. Will run a cylinder. So this is a, what is this? This cylinder is a, it is having a curved surface area. ये क्या हो गया? Curved surface area हो गया. और यहाँ नीचे और ऊपर क्या है? दो प्लेन सर्कुलर एंड्स है. क्लियर? अब इसमें जो इसकी ब्रेथ है B, so that B is equal to क्या हो गया? H हो गया. Clear? That B is equal to H and the circle which is there at the end. तो उसका अगर हम आउटर सरफेस ले रहे हैं, अगर हम इसको ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सर्कल का क्या था? एक्चुअल में ये सर्कल का क्या हो जाएगा? सर्कमफरेंस. ठीक है, so this circumference will be 2 pi r. So L is equal to 2 pi r and B is equal to H. So thus the curved surface area of cylinder is equal to 2 pi r H. So what we have got? Curved surface area of cylinder is 2 pi r. Now if the cylinder is closed from both the ends, then the area of the two congruent circles can be added to curved surface area to get the total surface area. Now, this circle is closed at both the ends. So, TSA will be the sum of this curved surface area plus area of these two circles. And what is the radius of this circle? इसका radius क्या है? R है. तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. सेम पाई आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया? व्हाट इज दिस पोर्शन? एरिया ऑफ दिस पोर्शन, इट इज 2 पाई आर एच. सो द टोटल सरफेस एरिया विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल. सो व्हाट इज आवर एरिया? टोटल सरफेस एरिया 2 pi RH plus 2 pi R square. So that will be 2 pi R H plus R. So thus we have got that the curved surface area of cylinder as 2 pi RH and the total surface area of the cylinder is 2 pi R H plus R. Clear? Now let us start exercise 13.2. In the 13.2 exercise, question number 1 is the curved surface area of a right circular cylinder of height is 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of base of the cylinder. Now what is given to us? The curved surface area किसका? Of a right circular cylinder of height 14 centimeter. So what is given to us? Height of the cylinder is 14 centimeter. What is given to us? Height of the cylinder is 14 centimeter and the curved surface area of this cylinder is 88 centimeter square. We have the radius is not given to us and we have to find the diameter. What is diameter of a circle? Diameter of a circle is twice the radius. Now, what is given to us?
CSA is equal to 88 centimeter square. Now what is CSA of a cylinder? It is 2 pi RH. Now put the values which are given to us. So what is CSA? 88, 2 and pi. It is given in the exercise, at the top of the exercise. We have to take the value of pi as 22 by 7. So it is 2 into 22 by 7 into R into 14. Now this 7 and 14, they will cancel out. So 7 2s are. Now what is remaining? 2 into 22, 44, 44 into 2, 88. So 88 is equal to 88 R. So what will be R? This 88 will come this side. So 88 divided by 88. So how much you will get? R equal to 1 centimeter. Now what is arc? Find the diameter. So we know that diameter is equal to 2R. So this is 2 into 1, which is equal to 2 centimeter. Question number 3 of exercise 13.2. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, second, outer curved surface area, and third, total surface area. So now, what is given in the question? In the problem, it is given that a metal pipe is there. So pipe is hollow from the inside, है ना? तो पाइप कैसा होता है? एक आउटर डायमीटर मिला अपन को, एक ये this is the pipe and this is the thickness of the pipe. Clear? So what is given? Outer diameter is 4.4 centimeter. This inner diameter of the pipe is 4 centimeter and the height of the pipe is 77 centimeter. Now, in our problem, what is given? For pipe, H is equal to 77 centimeter. What is DI? Means inner diameter is 4 centimeter. So what will be the radius? Radius is half of the diameter. So it will be DI by 2, that is 2 centimeter. Outer diameter is given as 4.4 centimeter. So RO is equal to, outer radius is equal to 2.2 centimeter. Now, what is our first question? To calculate the inner curved surface area. Inner curved surface area is 2 pi. What is the curved surface area of cylinder? 2 pi RH. And what is R here? अगर हम सिर्फ इस अंदर वाले पाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया देखें, ये शेडेड रीजन का, तो क्या आएगा? इसमें रेडियस क्या लेना पड़ेगा? The radius is taken as the 2. So 2 pi RIH. So that will be putting the value 2 into 22 by 7 into 2 into 77. How much we are getting? 968 centimeter square. Similarly, to find the outer curved surface area, इसके ये बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो इस पूरे पाइप के बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा. So in that, what we will take? This diameter, outer diameter we have to take. So what? So in the formula, what we are having? CSA is 2 pi RH. So here our formula becomes 2 pi ROH. Now putting the value 2 into 22 by 7 into 2.2 into 77, 1064.80 centimeter square. Now in the problem, what is given to us? Pipe. Now consider this as a pipe. Okay. So what is this? This is a pipe. अगर हम इस पाइप को देखते हैं, ओके, तो इसमें क्या है? दिस इज द आउटर कर्व्ड सरफेस. ये बाहर वाला हिस्सा क्या हुआ? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड दिस, ये जो अंदर आपको दिख रहा है, दैट विल बी द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. ये अंदर का जो पोर्शन होगा, दैट इज सेड टू बी द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड दिस टू वी हैव कैलकुलेटेड. हमने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल लिया और इनर भी निकाल लिया. अब इस पाइप में देखो, व्हाट इज देयर? अगर इस क्रॉस सेक्शन को देखो, सी दिस क्रॉस सेक्शन. So what we are having? We are having actually we are having a ring. एक ring है ना? Look here. Look at this figure. So what we are having? We are having this ring. ये क्या है? अंदर से खाली है, hollow है. So this ring is, we have to find the area of
this ring. And how many such rings are there? 2 rings are there. So in the next, what we have to find? Total surface area of the pipe. So the total surface area of the pipe will be inner curved surface area plus outer curved surface area plus 2 into area of ring. Now how to calculate the area of ring? Now this is your ring. To calculate this ring, आपको सिर्फ इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. तो आप क्या करोगे? बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल को माइनस कर दोगे. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रिंग? पाई RO स्क्वायर माइनस पाई RI स्क्वायर. तो टेक आउट कॉमन पाई RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर. So this will give you the area of the ring. And now let's move to our problem. We have to find, ये हमने calculate कर लिया inner curved surface area. We have calculated outer curved surface area. For the TSA of pipe, we have to sum up all the area. तो हमारे पास कौन कौन सा एरिया था? आप ये सपोज करो कि अगर इसको पेंट करना है तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे? बाहर करोगे, अंदर करोगे, इस रिंग में भी करोगे, है ना? So inner is 968, outer is 1064.80, which we have calculated. And for the area of ring, the formula is 2 into, why 2? Because 2 rings are there. So 2 into pi RO square minus RI square. Now by putting the value, what we will get? 2 into 22 by 7, 2.2 whole square minus 2 square. So this will be 2032.80 plus 2 into 22 by 7, 4.84 minus 4. Now 4.84 minus 4 is 0.84. And when we will multiply this with 2 into 22 by 7, how much we are getting? 5.28. So our total area of the pipe is 2038.08 centimeter square. So in this way we will calculate the, don't forget the area of the ring. बच्चे भूल जाते हैं normally. Yes, next problem. Next problem is question number 4. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. We have to find the area of the playground in centimeter square. So what we have to calculate? Area in meter square. Now what suppose this is the roller. Suppose this is a roller. अब अगर इस रोलर को हम रोल करेंगे, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना? देखिए ये रोलर है, इसको अगर आप एक बार पूरा रोल करोगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? The distance covered in one revolution will be, or the area covered in one revolution, sorry, not the distance, the area covered in one revolution will be circumference of this roller. अब इस रोलर को अगर इस पे आप रोल कर रहे हो, कहाँ रोल कर रहे हो? इस पे आप रोल कर रहे हो, तो आप फर्स्ट रोल करोगे तो ये इतना कवर करेगा. तो ऐसे ही रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है? इसको 500 कर ले रहा है, तब वो जाके क्या कर रहा है? पूरे प्लेग्राउंड को कवर कर रहा है. क्लियर? सो व्हाट इज गिवन टू अस? द डायमीटर ऑफ द रोलर. The diameter of the roller is 84 centimeter and answer we want in meter square. So from the starting itself we will convert all the things into the meter. So radius कितना हो गया? 42 centimeter. So in meter it will be 0.42 meter. What is the length of the roller? 120 centimeter. So it will be 1.20 meter. Now one number of revolution to level playground is 500. मतलब अगर ये पूरा playground है
तो इस पूरे प्लेग्राउंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कर ले रहा है? 500, तब जाके इस पूरे को वो कवर कर पा रहा है. ओके, so first what we will do, we will find what is the area covered by the roller in one revolution. So that will be equal to the circumference. So it will that will be equal to the curved surface area of the cylinder. So area leveled by the roller in one revolution will be CSA of cylinder. It means it will be 2 pi RS. So it is coming as 3.168 meter square. Now to cover the whole area, how much revolution it is taking? 500 revolution. So one revolution में कितना area? 3.168 meter square. So 500 revolution में 3.168 into 500, which is equal to 1584 meter square. Now question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meters and diameter 5 centimeters. Find the total radiating surface in the system. Now what is given? A cylindrical pipe. जो water heating system है वो किस shape में है? It is in the shape of the cylindrical pipe of length 28 centimeter and diameter 5 centimeter. मान लो ये shape है, ठीक है? तो जो इसका total radiating surface होता है वो सिर्फ क्या होता है? इसका curved surface area, ऊपर नीचे वाला area नहीं होता है. So what is the radiating surface of this cylinder or this cylindrical pipe in the heating system? क्या निकालना होगा हमको? Radiating surface क्या होता है? Only the CSA. So what we have to calculate in question number 8? CSA of the given cylinder. Question number 9 from exercise 13.2. Find first the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. Second, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? Now, let us solve the problems one by one. In the first one, what is asked? The lateral or the curved surface area of the closed cylindrical petrol storage tank. Now what is given to us? It is a closed cylindrical petrol storage. The cylinder is a closed cylinder. So it means we are having the curved surface area. अगर उसका हमको total surface area निकालना है तो उसमें curved surface area है और दोनों दो surface भी cylindrical circular दो circles भी है at the end. Now in the first one, what is asked? What is given to us? Diameter is 4.2 meter. So the radius will be 2.1 centimeter and height is 4.5 meter. This is given to us. And what will be the CSA of the cylinder? It will be 2 pi RH. Now putting the value, we will get 59.4 meter square. Now this second one, this is more important, है ना? ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है. How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? Now suppose करो कि suppose we are giving 2 meter cloth to the tailor. अब उस 2 मीटर का पूरा तो यूज नहीं हो जाता है ना, उसमें से कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ वो रख लेता है. तो मान लेते हैं हम उसने कितना रख लिया, कितना वेस्ट हो गया कितना, मान लो आधा मीटर वेस्ट हो गया. तो जो आपकी शर्ट बनी है वो एक्चुअली किससे बनी है? वो पूरे 2 से नहीं बनी है, वो किससे बनी है? 2 माइनस 0.5 मतलब 1.5 मीटर से बनी है. इज इट क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पे जो भी स्टील था, मान लो हमारे पास क्या है, लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ शीट यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर. x मीटर स्क्वायर हमारे पास एक्चुअल में शीट दी गई थी. जब हमने उससे क्या बनाया,
सिलेंडर बनाया, वो भी कैसा, क्लोज्ड सिलेंडर। मतलब कहाँ कहाँ यूज हुआ स्टील, कर्व सरफेस एरिया में, ऊपर के सर्कल में, नीचे के सर्कल में, क्लोज्ड है ना, ओके। मतलब टीएस से हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। स्टील पूरा टोटल सरफेस एरिया जितना है उतने के लिए यूज हुआ। अब उसमें से वेस्ट कितना हो गया, बर्बाद कितना हो गया, 1/12। तो एक्चुअल में कितना स्टील है हमारे पास, 11/12x। और इस एक्चुअल स्टील से हमारा क्या बना है, सिलेंडर बना है। तो दिस एक्चुअल स्टील शुड बी इक्वल टू द TSA of the tank. Now, what is the steel which is given? Actual area of the steel used कितना है, x मीटर स्क्वायर है। उसमें से वेस्ट कितना हो गया, 1/12x हुआ। तो एरिया ऑफ द स्टील which has gone into the tank, एक्चुअल में टैंक बनाने में कितना यूज हुआ, x minus 1/12 of the x, 11/12x, and this should be equal to the TSA of the tank, क्योंकि जो टैंक बन रहा है वो क्लोज टैंक है, तो ऊपर का भी बना, नीचे का भी बना, CSA भी बना। तो इतनी जगह हमको उस टैंक को बनाने में स्टील लग गया। So this 11/12x will be, what is TSA of tank? It is CSA plus area of the two circles. So 59.4 plus 2 into 22/7 into 2.1 whole square. कितना आ गया, 11/12x is equal to 87.12. So what is x? 87.12 into 12 upon 11, and which is equal to 95.04 meter square. So in every problem first we have to take care what is asked and how to find, then we have to apply. ये नहीं कि CSA बोला डायरेक्ट निकाल दिया, TSA बोला डायरेक्ट निकाल दिया, closed है, openness, all the things we have to take care. Question number 10. In figure 13.12, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much of cloth is required for covering the lampshade. ये लैम्पशेड है, इस लैम्पशेड को हमको किससे कवर करना है, डेकोरेटिव क्लॉथ से। तो जब हम क्लॉथ से करेंगे तो इतना ही कपड़ा नहीं काटेंगे, इतना ही कागज नहीं काटते, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे ज्यादा लेते हैं, है ना, उससे उस जो भी लेंथ होती है उससे हम ज्यादा लेते हैं। क्लियर? जैसे आप कवर चढ़ाते हो तो एग्जैक्ट साइज नहीं ले लेते हो, आप क्या लेते हो, उससे बड़ा लेते हो कागज, है ना। वैसे ही यहाँ पे हम जो क्लॉथ लेंगे वो क्या होगा, ऊपर और नीचे उसको कितना, फोल्डिंग के लिए कितना मार्जिन छोड़ेंगे, 2.5 का। तो एक्चुअल में जो हम क्लॉथ ले रहे हैं वो भी सिलेंडर बनेगा, है ना, वो भी सिलेंडर बनेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, वो उससे उस क्लॉथ से इसको कवर कर रहे हैं, है ना। सो व्हाट इज द इफेक्टिव हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो क्लॉथ की हाइट होगी वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव हाइट ऑफ द सिलेंडर। दैट विल बी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ऊपर नीचे का मार्जिन मिला के कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर। So what is the cloth required? Cloth required will be the CSA of the cylinder, which is equal to 2 pi RS. Put the value and get the answer. है ना? I think you can solve it yourself.